This meeting is being recorded. Namaskar friends. Very good afternoon to all of you. Friends, 2022 की आज हमारी पहली वेबिनार है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे शिष्य मेंबर हंसराज छुग जी ने हमारे इनविटेशन को इनवाइट किया और वो प्रेजेंट आए. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. हमारे बीच हमारे फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी भी आ चुके हैं. वेलकम सर. फ्रेंड्स, इस साल की शुरुआत हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ करने की कोशिश की है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो डायनेमिक्स है वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं. अभी कुछ दिनों से अगर आप मार्केट में डील कर रहे हो तो मार्केट भी देख रहे होंगे, मार्केट में भी काफी उतार ही है, चढ़ाव तो हो नहीं रही 3-4 दिनों से. तो ड्यू टू कुछ फेड रेट में चेंजेस आने वाले हैं. साथ ही साथ हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस है, चाहे सीए अमेंडमेंट बिल की बात हो, चाहे और भी चीजों की बात हो. इन सब EDSC का हमारे वेबिनार एक शुरू करें और उसमें हमारे सीसी मेंबर खासकर हंसराज जो जी हो, तो इनसे बढ़िया तो कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं हमारे लिए. तो फ्रेंड्स, अब हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. शुरुआत करने के पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी, आप प्रोग्राम की शुरुआत करें. हंस चुग साहब के बारे में भी जरूर बताएं और एक एक्सपेक्टेशन बताएं प्रोग्राम से. सर, ओवर टू यू सर. Thank you, Sandeep, the convener of our study circle, and most respectful our own Central Council member श्री हंसराज चुग जी. आपका बहुत बहुत गर्मा गर्म जोशीला आपका स्वागत. दूर से ही कर सकते हैं, ठंड का समय है. तो बहुत बहुत आपको बधाई सर. रीइलेक्ट होके एक तो आप हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफ दी आप ICI हमारी काउंसिल में आए, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई. और इस बात के लिए बधाई कि हमारा पहला सेमिनार 2022 का आज आपसे इनॉग्रेट करने जा रहे हैं. सारा कुछ अच्छा होता तो हम फिजिकल आपको बुलाते, गुलदस्ता भी देते, लोगों से मालाएं भी पहनवाते, लेकिन आप हमारी तरफ से, सबकी तरफ से ये स्वीकार करें कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं. दोस्तों, आज हमारा, जैसा संदीप जी ने बताया, पहला सेमिनार. हमने कहा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है और साल में एक बार 2 बार ये चीजें बदलती भी रहती हैं. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा चाहे इस तरह का हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बीइंग ए ऑडिटर, बीइंग ए कंसल्टेंट टू दी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हमको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए. तो इसलिए चुग साहब की ये एग्री हुए इस बात के लिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी डिस्कस किया जाए. अभी जिक्र हुआ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ग्लोबल, मतलब एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है. तो वो जैसे अभी बातों में संदीप जी बोल रहे थे कि मार्केट तो डाउन ही डाउन हो रहा है, तो नेचुरली ये भी सारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ही या ग्लोबल इम्पैक्ट के पार्ट होते हैं. वो क्या होंगे वो किसी हम कल है हमारा कैपिटल मार्केट पे. बाकी ग्लोबल इम्पैक्ट का क्या है वो चुग साहब भी बता भी सकते हैं आज की सेमिनार में. तो चुग साहब हमारे दोस्त हैं, ईस्ट दिल्ली से ही रहने वाले हैं. NIRC में हम फॉर्चुनेट है कि हमारे साथ रहे थे चुग साहब, और अब पॉलिसी मेकिंग सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं. तो चुग साहब आपका बहुत बहुत स्वागत. अब ये बताऊं कि BCom करी है, CA करी है, वो तो करी ही है. इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी भी है और इनका कोर एरिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इस चीज पे ज्यादा है, बिसाइड्स ऑल अदर थिंग्स. तो इन्हीं शब्दों के साथ चुग साहब का बहुत बहुत स्वागत. एंड ओवर टू संदीप जी के आप थोड़ा सा स्टार्ट करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ऐसे तो चुग साहब के बारे में बोलना मतलब काफी आप कम होगा, कुछ भी आप बोले उनके लिए कम होगा, बट थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूंगा. जैसे सर ने बताया, चुग साहब जी हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर के होने के अलावा CS इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, फेलो मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, IP प्रोफेशनल है, लॉ ग्रेजुएट भी है और एक लंबा 3 डिकेड का करीब एक्सपीरियंस है इनको प्रोफेशन के. साथ ही साथ इन्होंने प्रोफेशन की बड़ी सेवा की है, चाहे NRC हो, चाहे सेंट्रल काउंसिल हो. NRC में भी काफी टर्म्स हैं,
सेंट्रल काउंसिल भी दूसरा टर्म है उनका, और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे बहुत ही मजबूत पकड़ है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जब जब हमें पिछले सालों में भी जब जब जरूरत हुई हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के में कुछ करवाने की या कुछ नॉलेज लेने की, एक्सपीरियंस लेने की, हमने हमेशा शुभ साहब को याद किया और इन्होंने बहुत ही अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्रोग्राम को जितना इंटरेक्टिव रख सके रखें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। और अब ज्यादा समय न लेते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शुभ साहब, प्लीज स्टार्ट योर डिलीवरेशन। ओवर टू यू सर। थैंक यू संदीप जी। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी इस तरह के प्रोग्राम में होते हो जिसमें आपके अपने दोस्त लोग, अपने क्लोज मित्र लोग साथ में हो, तो आपकी एनर्जी और आपका जो है पावर जो है वो डिफरेंट लुक देती है। जैसे आज हमारे संदीप भाई की रिक्वेस्ट आई और एक हमारे पास्ट चेयरमैन ऑफ द रीजनल काउंसिल जिनके साथ हमारा लंबा अरसा, लंबी जिंदगी हमने साथ में गुजारी, चाहे वो रीजनल काउंसिल में थे या एक दोस्त होने के नाते जो है जब उनसे एक मिलना जुलना होता है तो एक फील जो है पर्सनलाइज फील होती है। तो इसी सिस्टम में जो है कहा गया है कि भाई एक प्रोफेशनल जब लोग आपस में मिलते हैं, चाहे वो इंटरेक्शन किसी सब्जेक्ट के ऊपर हो या पर्सनल हो, तो आपको एक चार्ज, एक फील जो है, एक एनर्जी जो है वो डिफरेंट लुक देती है। तो आज मेरा भी एक सौभाग्य है कि वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम में हमारा पार्टिसिपेशन रेगुलर बेसिस पे रहता है, लेकिन ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है पहला प्रोग्राम जो मैं इस नए साल के अंदर करने जा रहा हूँ, उसमें ये पहली अपॉर्चुनिटी हमारी ईस्ट दिल्ली सीपी स्टडी सर्किल द्वारा दी गई। तो मैं अपने इसके फाउंडर दुर्गा दास अग्रवाल जी और जो अभी करंट कन्वीनर हैं संदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और नेचुरल सी बात है कि जहाँ पे ट्रेड की बात आती है, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड हो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कनेक्ट करती हैं हमारे प्रोफेशन को। जबकि हम नॉर्मली बात करते हैं प्रोफेशन की तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड जो है अपने सब्जेक्ट्स को सीमित रखते हैं। लेकिन जब हमारा अभी कुछ समय पहले भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुंबई में थी जिसमें मैं भी था, तो नितिन गडकरी जी उसके अंदर एक हमारे चीफ गेस्ट थे। तो दो ही वाज वर्चुअली अवेलेबल, लेकिन उसका जो स्ट्रेस था, उनका जो फोकस था, वो हमेशा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही इंडियन इकोनॉमी को अंदर एक ग्लोबल लीडरशिप और ग्लोबल ट्रेड की बात उन्होंने बहुत जबरदस्त अपने तरीके से रखी। और उन्होंने दो एंगल को कनेक्ट किया, एक तो ट्रेड को डेवलप करने के लिए, एक तो ट्रेड को डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट को डेवलप करने के लिए, और एक इंपोर्ट को जो है का सब्स्टिट्यूट करने के लिए। उसमें दो बेसिक पॉइंट्स निकाले उन्होंने कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट को ग्रो किया जाए और इंडिया का जो इंपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, लेकिन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जितने हैं या इंपोर्टेड सर्विसेज जितनी हैं, उसका यदि सब्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ जो है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट इंपोर्टर है इंडिया, लेकिन उन्होंने एक सब्स्टिट्यूट निकाला एथनॉल। एक सब्स्टिट्यूट निकला कि आप एथनॉल को जो है प्रोड्यूस करो इंडिया से, और एथनॉल प्रोड्यूस करना इंडिया के लिए कोई ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि सरप्लस जो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे हम शुगर केन की बात कर लेते हैं, या बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो एग्रो बेस्ड हैं, जिनके अंदर, जिससे हम अपने आप को जो है जो हमारा जो वो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन है जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट बन सकता है, तो वो एक उनका आइडिया उन्होंने वो दिया। लेकिन ये कोई आइडिया नया नहीं था, आइडिया कहीं ना कहीं समय समय पे रिसर्च चलती रहती है, समय समय पे चीजें चेंज होती रहती है, तो उसमें से जो है डिफरेंट आइडिया निकलते हैं। लेकिन इनको रिवाइव करना, इनको बार बार दोहराना, उससे हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है। तो अब हम जैसे हम बात करते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड क्या है कि ये एक पहले सिस्टम जो चलता था 1992 से पहले,
एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के थ्रू चलता था, इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर होते थे, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर होते थे। लेकिन 1992 के अंदर जो है, फॉर्चुनेट एनफ कि उस समय की जो देन गवर्नमेंट थी, उनका एक डिसीजन जो है वो पूरे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक बदलाव लाने के लिए जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यदि हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो एक सिस्टम हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और एक सिस्टम हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी। तो आप सब जैसे जानते होंगे, ये हमारा जो कंट्री था, ये इट वाज अंडर द ग्लिचेस ऑफ द फॉरेन नेशनल्स, और यहाँ का जो कंट्रोल था वो कम्युनिस्ट थॉट के द्वारा चलता था, कम्युनिस्ट थॉट के द्वारा, रशियन सो कॉल्ड रशियन काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो ये जो है हमारा ये समय जो चला 1980 तक, ये प्रोग्रेस, इस तरह का जो है माहौल चला कि हमें अपनी इंटरनल पावर्स को और इंटरनल कंजम्पशन को ही जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज हमें कुछ नहीं देखना है। जरूरत की चीजों को हम इंपोर्ट करें, जो ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करें, उनको कंट्रोल करें, उनको प्रोहिबिट करें, और इसी तरह एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत दें, हमारी जो अपनी इंटरनल नीड्स है उसी के ऊपर जो है हम ध्यान दें। ये 1980 तक की ये स्टोरी थी। उसके बाद में ये क्या था, ये 1% ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ जो है 1% को देती थी ये, और 1% की पॉपुलेशन की ग्रोथ थी। तो ऐसा मुझे जो है कुछ किताबों में पढ़ने को मिला कि इससे हमारी एक लिमिटेड ग्रोथ थी। तो दूसरा स्टेज आई 3.5% की ग्रोथ। 3.5% की ग्रोथ के अंदर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल तरीके से जो है एक माइंड के अंदर चेंज लाने के बाद में एक लिमिटेड ओपननेस जो है वो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई 1980 के अंदर। लेकिन 91-92 के अंदर जो है, जब ग्रोथ के पैरामीटर्स जो है 6 से 8% तक पहुंचे, वो एरा है 91-92 का। यहां एक बदलाव की भावना हुई। जैसे हम रिफॉर्मिस्ट की बात करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये एरा हमारे पास 91-92 के पास है। तो कुछ मेंबर्स लोग जो है इस एरा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेंबर्स को मालूम है कि उससे पहले 92 से पहले जो है हमारी पोजीशन क्या होती थी। 92 के बाद में एकदम जब बदलाव आया, पूरा जो मल्टीनेशनल कल्चर जो है, मल्टीनेशनल बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉर्च्यून 500 कंपनीज या और कंपनी के अंदर इंडिया में कदम रखा, तो एकदम एक ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे हम बात करते थे कि भाई हमारी नीड बेस्ड चीजें भी जो है वो कम्पिटिटिव रेट पे मिलनी शुरू हो गई, वो एक रीजनेबल रेट पे मिलनी शुरू हो गई, और जो लेयर चीजें थी जो कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते थे, उनकी अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर एश्योर हो गई। एम्बेसडर गाड़ी या मारुति 800 जो है वो दैट वाज रिमेन एज ए टॉक ऑफ द टाउन, बट दैट हैज डन अवे विद इन 1992. द होल वर्ल्ड हैज फाउंड द अपॉर्चुनिटी. ऑल बिग, whether it is the auto sector, whether it is the telecom sector, whether any service sector or any good manufacturing machines or technology, all were made available for the country to grow with. किसी भी कंट्री का ग्रोथ किस तरह से मेजरमेंट होता है, उसके रिसोर्सेज के अंदर जो है, उसके कंटेंट्स के अंदर जो है, उसके थॉट के अंदर जो है एक लिमिटेड, जब एक ओपननेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसका मतलब ब्रेन की ग्रोथ है। एक थॉट के अंदर जब बिजनेस कम्युनिटी एंटर करती है, बिजनेस अपने सिस्टम के अंदर एक ग्रोथ चाहती है और उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अंदर, तो आप समझो कि उस कंट्री की जो थॉट है वो उस तरह की है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो इसका मतलब वो ओपन कंट्री है। इंडिया हैज ब्रॉट दैट स्टेटस इन द ईयर 1992। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई ओपन मींस विदाउट एनी रेगुलेशन और विदाउट एनी मैनेजमेंट। तो अंडर दिस केस
इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट इकोनॉमिक और कॉमर्शियल लॉ के अंदर जो है नए लॉ लाने पड़े, पुराने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। उस तरीके से हमारे जो सिस्टम के अंदर एक बदलाव की जो पैरामीटर्स हैं, या जो हमारा कंट्रोल या जो हमारा मैनेजमेंट जो है, या रेगुलेशन मैकेनिज्म के अंदर है, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, उसको जो है उसको बदलाव के द्वारा जो है, उस डिफरेंट लॉ के द्वारा जो है उसके अंदर उसको कंट्रोल भी किया गया। आप सब समझते हैं कि इंडिया के अंदर 3 बेसिक पैरामीटर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक पैरामीटर हमें कहता है कि जो लॉ मेकर है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा है उस लॉ को जो है जो एडमिनिस्टर करने वाले, जो मैनेज करने वाले लोग हैं। तीसरा जुडिशियस प्रोसेस है, जुडिशरी है। तो 20 के लोग जो है वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं। फर्स्ट लेवल है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। वो लॉ उस तरीके से जो नीड के हिसाब से चलती है, जरूरत के हिसाब से चलती है, जरूरत के हिसाब से लॉ चेंज करते हैं या जरूरत के हिसाब से नए लॉ लाए जाते हैं। तो इसी तरीके से एक लॉ आया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये इसकी इवॉल्व कहां से हुआ? जब इंडिया ने 92 के अंदर अपना माइंडसेट चेंज किया। इंडिया ने सोचा कि नो नथिंग डूइंग, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रिंगिंग आउट द मनी फ्रॉम द कंट्रीज, फ्रॉम द अदर कंट्रीज, और वी कैन नॉट सर्वाइव अनलेस अंटिल वी ओपन अप एंड ब्रिंग बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ओवरसीज। बट ऑब्वियस है कि आप जब ऐसी थॉट रखते हो तो आप कंपिटिटिव से बाहर जाते हो, कंपटीशन से बाहर निकल के एक दूसरे सिस्टम में जाते हो कि भाई यहां मोनोपोलिस्टिक अप्रोच खत्म करके फ्री इकोनॉमी, जिसका बेनिफिट होलिस्टिकली जो पूरे जो इकोसिस्टम को मिले। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए बेनिफिशियल हो। कुछ लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ के अगेंस्ट में भी जाएगा। तो पॉलिसी चेंजर, आपको भी पता है, इंडिया के अंदर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो सिस्टम के अंदर, लेकिन पॉलिसी के अंदर जब बदलाव के अंदर एक डिटर्मिनेशन था, एक हॉलिस्टिकली अप्रोच थी। आप कहते हैं कि भैया ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ 2 तरीके से होती है। एक तो डिटर्मिनेशन के द्वारा। आज यदि हमारे दोस्त जो है संदीप जी जो है कुछ डिटरमाइन कर लें कि मुझे ये काम करके दिखाना है, और हमारे मित्र दुर्गादास अग्रवाल जी जो मेरे सामने हैं, तो वो ये डिटरमाइन कर लें कि उसको जो है एक बहुत बड़ा अपना सिस्टम जो है को चलाना है, तो कौन रोक सकता है? एक्सेप्ट ही हिमसेल्फ। तो इसको कहते हैं हम डिटर्मिनेशन। तो उस समय की जो डिटर्मिनेशन थी कि हमें ये काम करके दिखाना है, इंडिया के अंदर एक ग्रोथ पाथ को डेवलप करना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है रीजन क्या बनते थे? एक चेंज करना, पॉलिसी के अंदर एक चेंज करना। और पॉलिसी मेकर ने जब ये ठान लिया कि भाई ये पॉलिसी चेंज होगी, अब हमारा सर्वाइवल भी नहीं है और हमारी ग्रोथ भी नहीं है, तो उस सिस्टम के अंदर एक लॉ आया, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। ये ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्री का लॉ है, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये WTO कंप्लायंट है। WTO एक ऐसा एग्रीमेंट इंडिया ने साइन कर लिया जो इंटरनेशनल ट्रेड बॉडीज के साथ में, कि हम जो भी करेंगे इंडिया के अंदर, हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे, इससे बाहर नहीं करेंगे। और इसी तरह एक्सपोर्ट करने के समय पे भी जो है, जो हमारी जो जिम्मेवारियां हैं, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे एज पर द इंटरनेशनल लॉ। और इंडियन लॉ भी उसी तरीके का बनाएंगे जो कंड्यूसिव इन कंफर्मिटी विद द WTO होगा। WTO रिव्यू करती है 4 इयर्स के अंदर अपनी पॉलिसी को, इंडियन पॉलिसी को, डेवलपिंग कंट्रीज के पॉलिसीज को, और डेवलप्ड कंट्रीज की पॉलिसी को एवरी 2 इयर्स दे रिव्यू इट। देयर इज अ प्रोसीजर इन्वॉल्व। तो इसी तरह जो इंडियन ट्रेड था, एक लॉ है कॉल्ड IDRA,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जैसे मैंने एक लॉ बताया फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है। एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ट्रेड के लिए है IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। जब तक आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग WTO के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बनाओगे, कंफर्मिटी नहीं बनाओगे, तो ये भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे कैटेगरी क्या होती थी? यहाँ पे कैटेगरी होती थी, एक जो रिजर्व कैटेगरी होती थी पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। दूसरी कैटेगरी होती थी फॉर द पर्पज ऑफ बाय वे ऑफ द हैविंग द लाइसेंस देयर इन इट। तीसरी कैटेगरी होती थी फ्री वाली, फॉर रिजर्व फॉर द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, या SSI के लिए रिजर्व होती थी। लेकिन क्योंकि चेंज तो एक माहौल था, तो चेंज लाया गया। जो ऊपर वाली कैटेगरी थी रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट ओनली, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओनली, 100% owned by the government, that was limited to the only the defense sector or certain sensitive sectors. But that also over a period of time has been made flexible. Now nothing is government thought of, it is not the government's job to carry the business. It is a simple understanding that government has no way can be a businessman. तो उस थॉट के अंदर जो है चेंजेस आए गए। जो कंट्रोल्ड वाला फैक्टर था, लाइसेंस वाला फैक्टर था, उसको इंटरप्रेन्योरल सिस्टम के अंदर इंटरप्रेन्योरल मेमोरेंडम फाइल करो एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू। जो SSI सेक्टर्स के लिए था रिजर्व, उसको खत्म कर दिया गया, ओनली लिमिटेड टू द इन द इनिशियल फेज, कि आप एक्सपोर्ट इतना करोगे तो आपको जो है ये इसमें रिलैक्सेशन होगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है चीजें ऑटोमेटिकली जो है फ्री इकोनॉमी की तरफ टर्न अप हो गई। अब जो सब्सिडी लॉ है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के से रिलेटेड लॉ है, फेरा होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको खत्म करके फेमा के अंदर लाया गया। इसी तरह जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स थे, तो वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट को ईज आउट किया गया। तो सारा जो सिस्टम है इकोनॉमी के अंदर, जो है इकोनॉमी का जो सिस्टम है, उसके अंदर एक बदलाव करके, एक फील देके, एक ऐसी चीजें करके कि जिसके द्वारा हमारी फ्री इकोनॉमी की शेप जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी की नजर आए। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी अभी भी आज भी सेम है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है और इंपोर्ट का कहीं ना कहीं हमें सब्स्टिट्यूशन या इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है, जो हमारे मोबाइल फोन है, इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन इक्विपमेंट्स जो है इंडियन कंपनी नहीं बना पा रही है। भले ही चाइनीज कंपनी बना रही है, या कोरियन कंपनी बना रही है, या जापानीज कंपनी बना रही है, लेकिन उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लाई गई। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा, यहाँ पे जो है जो हमारी अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और यहां से एक्सपोर्ट भी होगा। इन्वेस्टमेंट का भी क्राइटेरिया है। तो व्हाट इट इज बेसिकली सब्स्टिट्यूटिंग द इंपोर्ट्स। The manufacturer in our country is the same company which they are manufacturing from the overseas. Why it is been allowed? Why it is been promoted? There is a reason behind it. Ki it is generating employment. It is creating the atmosphere of the big development, industrial development. And fortunately, these schemes has brought a big name for the manufacturing hub, make in India concept. ये सारा कंसेप्ट जो है पॉलिसी ड्रिवन है। जैसे गवर्नमेंट कुछ सोचती है और उस पे एक्ट अपॉन करती है, तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एक सेक्टर स्पेसिफिक के ऊपर एक एडिशनल बेनिफिट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये अंडरस्टैंडिंग है कि फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारे पास कई सारे रूट हैं।
जैसे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, एक और एक्ट है जिसको हम कहते हैं SCZ एक्ट। वो जनरली DTA के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक पार्टिकुलर बॉन्डेड एरिया के अंदर, जैसे नोएडा SCZ आपने देखा होगा, इसी तरह इंडिया के अंदर सो मेनी एरियाज which has been developed as a SCZ zone, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उनका ऑब्जेक्टिव ही एक है कि इंडिया से बाहर वो फॉरेन टेरिटरी की तरह काम करते हैं। वो फॉरेन टेरिटरी, उनकी वर्किंग जो है वो फॉरेन टेरिटरी की है, और उस फॉरेन टेरिटरी के अंदर जो है जब हम काम करने की बात करते हैं तो वहां की जो ईज है, वहां की जो ईज है कि वहां इंपोर्ट अलाउड है, एक्सपोर्ट वहां से फ्री है, दे आर जस्ट वर्किंग लाइक ए इट इज ए टेरिटरी ओवरसीज। तो ये कंसेप्ट SCZ एक्ट के अंदर आता है। फिर हमारे यहाँ तीसरा कंसेप्ट आया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, आजकल काफी पॉपुलर है ये सब्जेक्ट, दो अभी तक जो है कोई पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनका जो है ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन इन द टाइम टू कम द इंडिया हैज वेकन अप, like trade agreements with the UK is under discussion, trade agreement with the Australia is under discussion, और with so many other countries also। ये क्या है, ये कंसेप्ट है कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री स्पेसिफिक, आप जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या FTDRA की बात करते हैं वो एक डिफरेंट माइंडसेट के अंदर बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको एक और भी लिवरेज है, एक और जो है फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आप किसी ऐसी कंट्री के साथ आपके अरेंजमेंट्स हैं तो यू आर आउट ऑफ द WTO टू दैट एक्सटेंट, whatsoever the benefit you are drawing from them or you are giving to them, that will not create any kind of the hassle in the foreign trade developer in the WTO। तो अभी क्या है, जैसे सपोज यूके के साथ एग्रीमेंट होता है तो यूके विल गिव द एडवांटेज टू द इंडियन इंपोर्टर, द पर्सन हु इज इंपोर्टिंग फ्रॉम आवर कंट्री इन यूके। सेम वे इंडिया हैज टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इंडिया विल गिव एडवांटेज टू द इंपोर्टर्स इन आवर कंट्री whosoever is importing from the UK also, because level playing field, equal footing between the two country, that is the concept. Same is with the region also. If it is from the EU countries, it is from the Asian countries, South African countries, or any country you name it. So it can be region based also, it can be country to country based also. This is the another concept. And the general concept is Free Trade Regulation Act, FTDRA, for Free Trade Development and Regulation Act, and the trade policy involved therein. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्री ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो है, जो गवर्नमेंट के पास पावर है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाने की, और उसके अंदर जो चीजें हैं हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके ऊपर चर्चा जो होगी हमारी, उसके लिए मैं आपके सामने एक PPT भी लेके आऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि भाई ये जो है आपको PPT मैं ऑर्गेनाइजर से भी शेयर कर लूंगा बाद में। संदीप PPT आ रही है सामने? अभी नहीं आ रही है सर। है नहीं आ रही है, एक मिनट सर, मैं व्यू ऑप्शन देख रहा हूँ। नहीं तो नहीं आ रही है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ सर।
रितिका हाँ, आ रहा है तुम्हारा आवाज आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। रितिका आप हो क्या वहां पे? एक सेकंड मैं देखता हूँ। राकेश ये आ जानी चाहिए थी। फ्रेंड्स, इन्हीं बीच में जब तक वो थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई है, तब तक मैं 2-3 डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। जस्ट मिनट सर। हेलो, हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस फ्रेंड्स, थोड़ी वो सिस्टम में इशू थी। चुग साहब फिर से ज्वाइन करना, तो आपसे मैं 2-3 डाटा शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो इंडिया इज नॉट सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ वर्ल्ड। अगर आप एक्सपोर्ट टारगेट देखेंगे तो एक्सपोर्ट टारगेट इट्स ह्यूज, इट्स $400 बिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट है इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 से कंपैरेटिव टू विज़ 20-21 में 10% एफडीआई में इंक्रीज हुई है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में एफडीआई इट वाज अराउंड $74.39 बिलियन। आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में $81.72 बिलियन हो गई है। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व पे देखेंगे तो 2014 इट वाज ओनली $322 बिलियन, जो कि दिसंबर 2021 को बढ़ के $635 बिलियन हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपनी इंडिया की अगर ई कॉमर्स मार्केट साइज देखेंगे तो ई कॉमर्स मार्केट साइज वाज अराउंड $14 बिलियन इन 2014, जो कि बढ़ के 2021 में $84 बिलियन की हो गई है। एंड 2025 में इट इज एक्सपेक्टेड कि जो मार्केट साइज है ई-कॉमर्स की अराउंड $188 बिलियन की हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप रैंकिंग में देखेंगे, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हो, चाहे ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स की रैंकिंग हो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग हो, काफी इम्प्रूवमेंट है। अराउंड जस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2014 में इट वाज 134, 2020 में अराउंड 63 हो गई है। सेम आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखेंगे तो 2014 में इट वाज 76 और 2021 में इट कम्स टू 50। इट्स अ ह्यूज। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर इज वेरी, मतलब टू माय माइंड पिक्चर इज वेरी गुड। और जो अब हमारे टारगेट्स भी हैं, टारगेट्स भी बहुत अच्छे हैं। साउंड देखना, राकेश स्पीकर
सर अब आ गई है सर, अब नजर आ रही है। अच्छा, आ गई है, ठीक है। जी अब नजर आ रही है। जी जी हाँ, है, क्लियर है हाँ जी क्लियर है सर। मेरी वो वीडियो। हाँ तो संदीप क्लियर है पीपीटी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है सर। ओके। तो जो मैं आपको बता रहा था, जी जी बेसिकली सॉरी इट स्टक अप समवेयर इन द सिस्टम। तो फ्रेंड्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमिक की सिचुएशन क्या है, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती हैं। आप डे ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस कुछ ना कुछ जो है हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर या सर्विसेज और मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ फिगर्स अपने इकोनॉमिक टाइम्स और कुछ फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देख रहे होंगे। उसके अंदर बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है ग्रो कर रहा है, और जो ग्रोथ हमारी 20 दिसंबर मंथ टू मंथ की बात करते हैं, दिसंबर 20 और दिसंबर 21 के अंदर जो है हमारी 25% की ग्रोथ है, यदि हम मंथ टू मंथ की बात करते हैं। और यदि हम पूरे ओवरऑल कुछ पीरियड की बात करते हैं, जो हमारे 11 महीने की जो है, तो उसके अंदर भी हमारी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ है। और जिसका टारगेट जो है, जो हमारी मिनिस्ट्री ने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारी डायरेक्टली ट्रेड से रिलेटेड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, उसने इस टारगेट को और बढ़ा के 600 बिलियन US डॉलर किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सपोर्ट्स। लेकिन क्या इज इट सफिशिएंट? नो, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग इंपोर्ट भी जो है हमारा बढ़ रहा है, जबकि हमारा टारगेट पॉइंट दूसरा भी है कि हमारे पास इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट जो है वो नहीं डेवलप हो पा रहा है इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। तो हमारे पास बचता क्या ऑप्शन है कि एक्सपोर्ट को ग्रो करने का ही एक बेटर ऑप्शन बचता है, जिसके द्वारा हम पूरे सिस्टम को अपने आप को सर्व कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की पोजीशन जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट ऑब्वियस है, इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग लेवल देयर बेस्ट। इकोनॉमी कहां से शिफ्ट हुई? इकोनॉमी एग्रो इकोनॉमी से, जो इंडिया की जो शेप थी एग्रो इकोनॉमी थी, टू द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी and the subsequently to the service sector economy। तो आज हम कौन से सेक्टर के अंदर हैं? आज हम सर्विस सेक्टर जो है का डेवलपमेंट जो है वो हाईएस्ट है। लगभग 55% ऑफ द इकोनॉमी इज द सर्विस सेक्टर ओनली। और जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो लगभग 10 से 12% है। बाकी जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है या प्रोडक्ट इकोनॉमी है। तो ये हमें क्या देती है? अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक क्लैरिटी देती है ये स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है यदि आपकी करेक्ट है तो आपके फ्यूचर को पॉलिसी मेकिंग के अंदर या पॉलिसी को समझने के लिए जो है एक आइडिया देती है, एक रिसोर्स देती है, एक इंफॉर्मेशन देती है, जिसके द्वारा आप अपने फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर ड्रिवन जो है पॉलिसी को बना सकते हैं। अब हमारे पास यदि हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो definitely there are the certain products which are more on the import side, but same product may be on the export side also। वैल्यू एडिशन करने के बाद में या कुछ प्रोडक्ट जो है इंडिया के अंदर इंपोर्ट किसी और कंट्री से होते हैं, एक्सपोर्ट किसी और कंट्री को होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे ट्रांसशिपमेंट या उस तरह के इश्यूज हैं जिसके द्वारा हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है एक क्लैरिटी आती है। फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जो है हमारे गवर्नमेंट को एक पावर देती है, जिसके द्वारा हम एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने के लिए जो है हमारे पास ऑथराइजेशन आता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भी पता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर द्वारा काम करता है।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक डिपार्टमेंट है विच एक्सक्लूसिवली डील इन द फॉरेन ट्रेड मैटर्स, प्रोसीजर देयर टू एंड द फॉर द मैनेजमेंट देयर ऑफ। तो ये क्या करता है, ये आपने जितने भी फॉरेन ट्रेड मैटर्स हैं, जितने भी फॉरेन ट्रेड के रेगुलेशंस हैं, उनको ड्राइव करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में सफिशिएंट डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी है। इसके बाद में लॉ ड्रिवन बॉडीज हैं जैसे कस्टम एक्ट, FEMA फॉर द रिलेशन ऑफ द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर द पेमेंट्स देयर ऑफ टू आर द मनी कमिंग इन टू कंट्रोल दैट। Then there comes in the holistically, there are the certain export promotion councils also, certain different departments also, which are basically making use of or supplement to the Foreign Trade Development Regulation Act and the Custom Law also. तो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने की पावर है। और इस पॉलिसी पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो थोड़े से प्रोविजंस जो है आपको, कि इसमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या हैं। any item to be imported or exported, any goods or services to be imported or exported for the purpose of trade and commerce, for the purpose of trade and commerce, one should have the importer exporter code number. IEC code number is must unless until you are exempted therefrom for the purpose of undertaking any import and exports, which is in the interest, which is in the for the purpose of the carrying any imports or export intended for the purpose of trade and commerce. Understood? Now this importer exporter code is nothing but it is the same number as a PAN number, but PAN number has to be registered on the website of the DGFT, dgft.gov.in, and which will automatically be considered as a you are an importer and exporter also. You have to verify the details, you have to give the same, and ultimately you get the same same PAN number as a IC number. Now, if you are an exporter of the commodity, any commodity or the services, one more condition which requires to be filled in if you want to claim the benefit under the foreign trade policy. You have to register or obtain the registration cum membership certificate from a export promotion council, availing any authorization or any benefit or concession under the foreign trade policy. For you have to obtain the RCMC from the concerned respective export promotion councils, FIO, commodity boards or authorities. This is just a formality. This is just a procedural aspects to be looked at so that the benefit are there in your pocket. Now, friends, this policy as such, policy is divided into 9 chapters. Policy is divided into 9 chapters. Before going to the policy, let us understand some mandatory documents for the purpose of the import and exports, which are mandatorily required. There are certain optional requirements also. For the purpose of export of goods from India, bill of lading, airway bill, lorry receipt, railway receipt, postal receipts. These are alternate documents, like if the export is through the shipping line, so then bill of lading. If it is by air, airway bill. If it is by road, lorry receipt. If it is by rail, so railway receipt. If it is by post or the by some courier, so then it is a postal receipt. So these are basically a carrier documents which proves like goods have been exported to the other country. Then commercial invoice and packing list. These are authenticating or evidencing the goods whatsoever is been exported, price which it has been exported, and the methodology by which it has been packed also. That is basically in it. So
Second is the import of the goods into India. It is the same way: bill of lading, airway bill, lorry receipt. The third document is the shipping bill, bill of export, postal bill of export. This is a authenticated documents by the custom department. Ki goods are actually been loaded on the ship and it has been let export order is been passed by the authorized officer, by the concerned custom officer. So this is a document evidencing by the government department ki goods has actually been exported from the country. So these are the three compulsory documents. Same three kind of documents: bill of lading, commercial invoice and packing list, bill of entry. Bill of entry is the replacement of the shipping bill. This is the authentication of the let import order being passed. Goods once arrived at the custom port, the government custom officer make a bill of entry, authenticated, verified, let import order is been passed. These three are the compulsory documents. In addition to it, between the two parties, there can be a different different documents also, which is between the two parties. They agreed upon the additional documents whatsoever is being required, like pre-shipment confirmation, pre-shipment some kind of the review also by third party. Certain documents like related with the insurance also, certain other documents also. So those are a condition as per the letter of credit also. So those are the compulsory, those are the documents which is between the agreed between the two parties. Now coming to it, there are the 9 chapters in the foreign trade policy. Chapter 1 simply gives what it is. Chapter 1 is the legal framework and trade facilitation. The purpose, the objectivity for which this policy is being brought in, and how it has been brought in, as already shared with you, this is under the Foreign Trade Development Regulation Act. The objectivity is to facilitate the trade, imports also as well as the exports also. That is the objective. And then chapter 2, general provisions regarding import and exports. You see, like there are the general understanding which I have already shared with you, or some will be shared by me now also. There are the certain general provisions by which imports and the exports takes place. If we talk about the imports, you can categorize in the 3 category. You can categorize under the 3 category. One is free. There is a ITC HS book, which at the same time remarks like free, restricted, prohibited. If it is under the free category, so you are allowed to, under the free category, you are allowed to import, discharge your liability of paying the duty and taxes whatsoever is. You get it cleared from the custom department to make use of the whatsoever you want to for the home consumption or for the industrial usage also, or for the purpose whatsoever for it is intended for. Then it is the prohibited. Second one is the restricted. Restricted is a precondition for the purpose of the imports. If you want to import any product which is restricted, if you fulfill the condition whatsoever is been along with it, like if you need to obtain any license, any permission from any authority, or any kind of the quality certificate, any kind of the issues whatsoever is been given there under the restricted category, you first have to comply with. Then only you are allowed to import. Otherwise, you are not allowed to import. It's a restricted category. You fulfill the condition, imports is been allowed, pay the duty, discharge the duty, and it is goods belongs to you, and whatsoever the purpose it is been meant for, you can use it. Third one is the prohibited. Prohibited in all the circumstances, all the situations, it is not been allowed to import. Exception
government to government transactions, or any transaction where the exemption certificate is been given by the DGFT, that with this that only are the exceptions to it. Now coming for the purpose of the all three category, free, restricted and prohibited, in the same manner for the purpose of the exports also. Same situation, exports free, you can export it. The importer will pay the duty as per the corresponding requirement at their country. And if it is under the restricted, you have to fulfill the condition before it is been exported. Third one is the prohibited, you are not allowed to export it. So these are basically the general conditions by which you undertakes the export of the goods or the import of the goods. These are basically the general conditions to be understood with. So now friends, certain situation can come in, like it is under the category as a free, but immediately in the interest of the nation or in the interest of the public here, government brought something under the prohibited category. What will be the position of the business? But obviously, you are not allowed to export, but there is a transitional provision also given under the chapter 2 itself. If you have a irrevocable letter of credit, or goods have already been manufactured and it has could not be exported because of the, so then under the situation of the transitional provisions, this has been allowed if you fulfill the conditions given under the transitional provisions. Friends, these are the general provisions under the foreign trade policy. Now coming to the chapter 3, friends, this is the chapter which is of the high importance for each one of us, because in nowadays time, every client of us, whether it is the smaller one or the bigger one, is somehow or the other exporting something or the other. Every exporter is, everyone is exporting something or the other. So there are the certain benefits available under the foreign trade policy for the exporters. So you see, like time to time, government brings out certain incentive schemes, certain promotional schemes. What is that? That is under the chapter 3 of the foreign trade policy, for the export of the goods also, for the purpose of the export of services also. And but obvious, if we know the policy or we know this incentive schemes or the promotional schemes, so then we can add value in our client's place. We can draw some kind of and we can give some kind of benefits by way of your being advisor to your client for these benefits. Now, what is the benefit? Under the, the policy every 5 years comes in. Foreign trade policy 1520, which has been extended till 31st March 2022, which is an ongoing policy. 1520 is still ongoing, which has its expiry on 31st March 22. Maybe 1st of April 22, you will get the new policy. But so far, let me divide in these schemes, promotional schemes, under the 2 categories. One is the goods, merchandise. Another one is the services. One is scheme called road tab, remission of duties and taxes on the export products. There used to be a scheme called MEIS, Merchandise Export from India scheme. From the 1st of January 21, this scheme is being replaced by the road tab. There is a provision, there is a system that duties and taxes has not to be exported. No government can afford
selling the goods to the overseas clients and levy the taxation system as it is like consumed in India? Certainly not, because there will be a taxes and duties in their own countries also, being an importing country. The same applies to the other countries also if we are an importer. So India wants to be a competitive exporter, so then duties and taxes has not to be levied. Certain, like if we talk about the GST, it is been taken care either by the refund of the duties or the input tax credit available to the all the trade communities, whether it is an exporter or non-exporter. So in that case, duties and taxes has been taken care of by refund or not levying the duties and taxes. Matter ends there as far as the GST is concerned. But there are certain products where GST still exists, like petroleum product, like many others. There are certain products where the state levies are there, state excise duties are there, excise duty in our system also, and then certain local taxes are also exist with. So having been understood with that these has to be refunded back to the exporter, so then this RoDTEP, which stands for the remission of duties and taxes on the export products, so that system has been drawn attention of for the exporters to be benefited with. But before that, there was a scheme called MEIS. 31st December 2020, export which have been affected, which has been taken place on or before 31st December 2020, the benefit will go in the earlier scheme. Earlier scheme was much beneficial because it was for the advantageous region. It was not for the refund of the duties and taxes or remission of duties and taxes. It was over and above, because India feels so that India is somehow inefficient in their infrastructure, and that adds cost to the exporters. So government argued to the WTO also, government deliberated there also, but WTO simply says it's an incentive. It is not the cost, it is not the taxes and duties. So this is not been allowed with. So then RoDTEP scheme came in. It is for the purpose of the export of the goods, merchandise. The similar has similarly for the services, because services are not under the regime. There are the certain relaxation in the services exports, because it is not being brought into that category like the product is. So SCIS, there can be an incentive also. The services export from India scheme continues in its original shape, but the rates and the some capping is being drawn attention for the year 1920. Friends, RoDTEP I just shared with you 1st January 21. FOB value of the exports percentage thereon has been given under the list. The percentage multiplied by the FOB value of the exports, you will be giving advantage of. This is a reimbursement or the remission. Refund will be given to the exporter in a credit scrip. It is in a ledger account formed under the there is a one portal at the ICE gate, specifically with your IC code number. In that case, in that amount is been credited with. Or if you want to make use of it for the payment of duty, or you can transfer it to the other party, so then you have to create a scrip in the case of the transfer, convert into the scrip, and you can transfer the scrip, or otherwise you can debit it through for the payment of the custom duty. That is the general procedure. It all is a technology driven, artificial intelligence driven system, and easily operationable. The scheme will be for all the sector. 8,555 items has been brought in there, but that item may be added further. There are certain
categories which are not been allowed so far. It will be taken care of in the time to come. Rate of the reward are notified in the appendix 4 are given under the appendix of the foreign trade policy. To avail the scheme, shall make a claim in the shipping bill itself by making a declaration. Once the EGM post filing of the EGM, claim will be processed by the custom authorities. Processing the scroll will be on a individual shipping bill for admissible amount would be generated and made available to the user under the ICE gate mechanism. The credit and you can transfer it through utilization by the way of the DSC, digital signature, can log into the account and generate script after selecting the relevant shipping bill. Script can be used for the payment of import duty or transfer it. So unrefunded or unexempted central, state and local, that is the concept. You see, like if the export product, no rebate under the scheme for duty already exempted. Whatsoever is already exempted, so then it is not allowed. What is the rate? 0.01% to 4.3%, 8,550 items. And the script ledger can be utilized for the payment of custom duty or other duties other than the GST, other than the IGST. That is the procedure to be understood with. If it is IGST is payable in the case of the imports, so then you have to pay by way of the payment, by way of the cash payments. Procedure is quite simple. It is all in the e-system. Or products not eligible, there are certain categories, though in the time to come, we are hopeful, like EOU, if you are an 100% EOU, so then not eligible. Products manufactured by the SCZ, FTWZ, then it is not eligible. But likely it will be brought into the system very soon. So there are certain, these are the non-eligible category. Friends, the scheme before was MEIS. MEIS is basically a scheme which was there till 31st December 2020. But the claim period lies, if your export is before that date, so your claim is still lying, so you can claim under the MEIS category. The claim period time is till 31st January 22 is the last date of the claim. The benefit available here is 2%, 3%, 4%, 5%, or 7%, depending on the product, depending on the listed goods under Appendix 3B. The rate is available on the FOB value of the exports, or amount realized, whichever is less. What was the purpose? As I have already shared with you, this was against the policy framework of the WTO. India lost its case in the WTO. The objectivity given by the government is to offset infrastructural inefficiencies and associated costs involved in the export of the goods products which are produced manufactured in India, especially those having the high export intensity, employment potential, and thereby enhancing India's export competitiveness. WTO simply says, you are giving a wrong intention. You are not giving any kind of the refund of the duties and taxes. Infrastructural efficiencies is not in a measurable terms what infrastructural efficiency you have. So then government lost the ground. And in the MES, one more thing to remember with, if you are exporting through the foreign post office or e-commerce system, so then the per consignment, the transaction will be considered at 5 lakh rupee per consignment. Even though in the system, the value may be higher, your benefit will be restricted considering per consignment at 5 lakh rupees. So with those kind of things, award will be calculated. There are the certain categories which are chapters which are not eligible.
like chapter 1, 2, 10, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 43, 47, 77. These are the non-available chapters where the benefit is not available. There are certain categories where this benefit is not available. Supplies by DTA to SCZ, transshipment, goods imported, exported as it is, deemed exports, SCZ supply to the DTA, DTA further supplies with, products which are subject to minimum export price or the export duty, export made by the units in FTWZ, this benefit is not available to you. These are the ineligible categories. Now, friends, let me come to the point of the export of services. You know, India is a service-driven economy. We all being a chartered accountant, we can undertake to supply our services of the chartered accountancy, whether it is accounting or the tax or the management consulting or others, to the overseas clients also. There are 4 modes. This scheme is meant for the encouragement for the export of notified services. Notified means there is a positive list. There is a list for which this benefit is available. It is no beyond. If your item is there, if your services have been listed there, then only your benefited is available. Then it comes in, there is a minimum threshold and mode of services and other condition also, you must have the importer exporter code number while providing the services, while exporting the services. One by one, I'll be sharing with you that total 4 modes by which one can export the services. One is the cross-border trade. Durgadas Agarwal ji, sitting here in Delhi, he can render the services to the clients in the Australia. He can give his services to his clients, whether it is the chartered accountants there or CPA there or some corporate clients there in the Australia. He can render his accounting services by way of the technology. The raw data is being received. He creates the financial statements. He creates the taxation system. He files his tax returns sitting there in India to the authorities there in the Australia. It is a cross-border trade. It services which without movement of any party, neither the service recipient nor the service provider, transaction takes place, service is rendered, payment realized in the free convertible currency. This is a cross-border trade. It is an eligible services under this category. Consumption abroad. A person who is an overseas party, overseas clients, corporates, non-corporates, individual, NRI, foreign national. For example, a hotels or hospital in our country, some foreigner visits to that place in a hospital for the purpose of medication, for some surgery, for the hotel, for some room rent being received, restaurant services being received, and he come for a tour and travel. He spends the money in the free convertible currency. So who is the consumer of the services? It's a person who is from the abroad. Who is the visitor? Service recipient is the visitor to the service provider. So under these 2 categories, this benefit is available. On these services, whatever is been listed, they are notified there. On the rate, whatever is been given in the appendix 3D itself or the 3X for the year 1920. Other 2 categories where this benefit is not there, like if you visit to the overseas client, overseas, and render the services there itself, so then this benefit is not available to you. 4th category, if you open up an office overseas, you open a shop there
and you open an office there and render the services from there itself, though you bring back the money in our India itself, but the benefit will be not be there to you. Benefit will accrue on only first two cases, two mode of services. Then minimum threshold, if you are an individual or the proprietorship firm, $10,000. Other than the individual or proprietorship firm, $15,000. Then this benefit will be available to you if you crosses the minimum threshold limit. The another condition to it is the one must have the importer exporter code number. One must have the importer exporter code number at the time of the rendering of these such services. Services, if rendered, and if you are not having the IEC code, so then you will not be eligible for the benefit for the unless until you have the IEC code. IEC code one received, subsequent services will be considered for the eligibility under this category. What is the on which, how to calculate the benefit? Net foreign exchange earns, gross earning of the foreign exchange minus total expenses, payment, remittances of the foreign exchange relating to the service sector in the financial year. One financial year, one application. For whole of the financial year, whatever the amount is being realized or the export is being taken place, minus the spending overseas, on which you have to calculate the percentage of the benefit available, subject to some limit also, capping also, of which the amount is available. Like 5 crore is the highest benefit in the 1920. 18-19 there is no limit. So 1920 capping is there of 5 crore rupee, which earlier people used to enjoy 100 crores of rupee, but that has now been limited to the 5 crore rupee. If IEC holder is the manufacturer of the goods as well as the service provider, then the foreign exchange earnings and total expenses, payment, remittances shall be taken into account for the service sector only. It will be not be for the purpose of the goods or the merchandise. Now it comes is there are certain ineligible categories, like certain transactions which are not of the revenue nature, which are of the capital nature, like relate to the financial services, like foreign currency loan, payment, export proceed realized from the clients, which was not of the services which are been falling under this category, or ADR, GDRs, issuance of the foreign currency bonds, sale of securities and other financial instruments, other receivable not connected to the services rendered by financial institution, EFC account, clubbing of turnover. So those are basically certain non-eligible items under this category. Now comes is the benefit. For the year 18-19, rate may be 5% or 7% depending on the services. Last date of the claim for 18-19 is the 31st January 22. This is the last month of the claim. 19-20 also, 31st January is the last date of the claim. The benefit is 3% or 5%. It has been reduced by 2% on the net foreign exchange earned. But here the capping has also been there of 5 crore rupee. And the amount realized in the through the international credit card will also be taken into account for the as per the RBI regulations. Now, friends, this is the list for which the benefit is available. List Appendix 3D for 18-19 and 3X, which is combined with it. Business services, professional, legal services, accounting, auditing and bookkeeping services, taxation services, architectural, engineering services, integrated engineering, urban planning and landscape architectural services, medical and dental services, veterinary services, services provided by midwives, nurses, physiotherapists and paramedical personnel,
These are under the 5% for the 1920 and 7% for the 1819. These are the two rates available for different years. Then research and R&D services on the natural sciences, social sciences and humanities, interdisciplinary R&D services, 5% or 7%. For 1819, 7%, 1920, 5%. Rental leasing services without operator relating to ship, relating to aircraft, other transport equipments, other machinery and equipments. So these are under the 5% category or 7% for 1819 and 1920, 5%. You may be some of our friends may be the owner of these items, so they can let out without operator to the overseas parties. Other business services, advertising services, market research and public opinion, management consulting services for 1819, 1920 it is not available. Services related with management consulting, 1920 it is not available. 1819, 5%. Technical testing and analysis services, 1819 it is available. 1920 it is not available. Services incidental to agriculture, hunting and forestry, services incidental to fishing, services incidental to mining, manufacturing, energy distribution, placement and supply personnel, investigation and security, related scientific and technical consulting services, maintenance and repairs of equipment, building cleaning services, photographic, packaging services, printing, publishing, conventional services. 3% for 1920, 5% for 1819. Communication, audio visual, motion picture and videotape production and distribution services, motion picture projection services, radio and television services, radio and television transmission services, sound recording services, 5%, 7%. Construction and related engineering, general construction, civil engineering, some installation and assembling business, building completion and finishing, 5%, 7%. Educational, primary, secondary, higher education, adult education, 5, 7. Environmental services, sewage, refuse disposal, sanitation and similar services, 5%, 7%. Health related and social services, hospital services, 5%, 7%. Tourism and travel related services, hotels and restaurant, tour travel agencies, tourist guide, 3%, 5%, 5%, 7%. Recreational, cultural and sporting services, entertainment, news agency, libraries, sporting, 5, 7. Transport services, maritime transport services, air transport services, road transport services, 5%, 7%. Auxiliary services to the all mode of transport, cargo handling, storage, freight agencies. For cargo handling, 1920 not eligible, 1819 7%. Storage and freight transport, 5%, 7%. So friends, these are basically the benefits available for the export of services. Believe me, there are so many exporters, those who are rendering services, and they are eligible, but they could not claim because they are not aware of the schemes available for them. Who can play the instrumental role? Who can play the role in it? The professional like us, we can play a bigger role. And the benefit is huge. Now it has been brought with a capping, but earlier it used to be 100 and 100 crores. Freely transferable license, you can sell in the open market. You can make use by way of the payment of custom duty. So these are the benefit available under both the schemes under the MEIS or road tax schemes or SCIS. So friends, these are certainly going to be beneficial if we know the foreign trade policy, we know the procedure. If naturally we collaborate, we bring our clients on the platform on board with us, and if we can do it, so naturally we will be beneficial financially also. Now it comes is the status holder. In the chapter 3 itself, you see like it is the human tendency or the corporate tendency that they should be given the benefit of the VIP category. So this is a benefit of that nature, like status. You are being given a status of a VVIP or VIP. So there are the 5 kind of status.
One is the 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star export house. Export house, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star export house. So depending on the threshold you met with for the last 3 years export plus current year export, last 3 years export plus current year exports, if it is goes beyond, if it is been take, you cross the threshold, so then you will be taken as a in that particular category. The earning in dollars during the last 3 years plus current year, if it is more than $3 million, so then 1 star export house, 25 million US dollar, 2 star export house, 100 million US dollar, 3 star export house, 500 million US dollar, 4 star export house, 2000 million US dollar, 5 star export house. So these are the benefits. These are basically recognitions. What is the benefit? No fiscal benefit, only ease of doing business. Business which you do with that you can do with little easiness. Self-declaration at the time of the custom clearance, both imports and exports. Sion fixation by the norms committee within 60 days, ease of doing business. Exemption from furnishing of bank guarantee under FTP and the other laws. Not compulsory documents negotiation from the banks. Certain establishment of the export warehouses. Certain under the Department of Revenue by the notification there. Preferential treatments. Those who are the status holder, they are easily can make use of the self-certification of the certificate of origin, free trade agreements under the category. Then manufacture self-certification origin. So these, or if you are exporting some free items, export free item as a sample, so your limit is been crossed, your limit is higher. So these are certain additional advantage for the status holder in the category 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. So friends, now these are under the provisions under the chapter 3 of the foreign trade policy. Now I'll be going to the chapter 4 of the foreign trade policy. Chapter 4 simply says duty has not to be exported or duty has to be refunded. This is the presumption, or this is the presumption, or this is the objective of the any duty. Suppose you are a product exporter, you are an exporter of some product, and to manufacture that products or produce that products, you have to import some raw material, you have to import some kind of the components to manufacture that products or produce that products. So then what is the need? You import and pay the duty. Certainly paying the duty will get you, either you can claim the refund, but there will be a flow of the money that will be impact your liquidity also. Government through this scheme called duty exemption scheme, advance authorization schemes, allows you to import duty free if the finished goods to be exported. You can import any raw material or any components, not payment, without payment of any duty. That is the advance authorization. Alternate to this scheme is the DFIA. First you export, then as per the zone, you are allowed to import. Duty-free import authorization. You are allowed to import, so then you are allowed to import duty-free because you have already exported the finished goods. In that case, you can either import it duty-free, or you can sell that import authorization to any other party also. He has not to pay the duty. So this is the alternate to the prior imports under the advance authorization. These are alternative to duty drawback. Either you claim the duty drawback or you claim these incentive, these duty-free imports. So now under this duty exemption schemes, what one has to do with, they are the condition to it.
either there is a standard input output norms, you are allowed to import as per the standard input output norms on the actual user conditions. But there has to be a value addition, 15% value addition. If it is not under the Sion category, it has to be on self-ratification scheme, self-declaration scheme. The period in which you have to import on obtainance of the advance authorization, 12 months, and 18 months you have to export it. If you are not able to export it, you can get the extension by payment of some compounding composition fee. Or even if you are not been able to export after the extension, 2 extension being received, so then you have to pay back the duty along with the interest to the government, applicable rate of interest. Exemption is from whole of the duty, all duty, even IGST also. Basic custom duty, all surcharge, anti-dumping, safeguard, all conditions, all duties are being exempted, including IGST. Now it comes in, if you are a regular exporter, so you can have one single license for whole of the year. Depending on the past exports, 300% of the FOB value of the physical export FOR in the proceeding, or 1 crore, whichever is higher, you can have the license equivalent to that. The FIA already discussed, 20% value addition required. Import has to be lesser than 20%. Duty drawback, it is not under the foreign trade policy, but it is under the custom law. Section 74, 75, 76 deals with the duty drawback. Where goods imported, exported as it is, you can claim back the refund, barring some administrative cost, whatsoever the percentage they keep it. So goods once after usage, without usage, depending on that, or there are the certain all industry rate fixed by the government. So under the duty drawback system, duty drawback custom duties rules 1995. So then under this system also you can claim, but this is alternate to the DFIA or the alternate to the advance authorization. So these are basically some chart given by if it is export within 2 years, so then 98% you will get the refund. If it is after usage within 4 years, so then certain discount is there. So those are the parameters under which one can claim the benefit under this scheme. Friends, now moving forward, because capital goods of the technology, good technology, state-of-the-art technology is good to produce the export products, is required for the purpose of the exports, for the purpose of manufacturing, pre-manufacturing, pre-production, production, or the post-production. Any capital goods which is not in the negative list, which has been there under Appendix 5F, you can import duty-free. You can import any capital goods which is not there in the Appendix 5F. Duty-free, all the duties are exempted, 0 custom duty. But what is the condition? If it is not there in Appendix 5F, you import it. So if you are an existing exporter, average of the last 3 years, suppose you are an existing exporter and during the last 3 years, you have exported 50 crore rupee average. Suppose 1 year you have done 50, another year you have done 75, the third year you have done 25, so then average comes in 50 crore. 50 crore is being exported during average for the last 3 years. The 50 crore you have to continue to be exported. But suppose you have imported a machine of 50 crore rupee and you have saved 15 crore, 15 crore. So 15 into 6, 90 crore over and above the 50 crore you have to export in the next 6 years. Next 6 years divided into 2 parts, 50% in 4 years,
another 50% in 2 years. But if you can make in 4 years itself, you can complete 75% of 15 crore. 15 into 6, 90 crore into 75%. So then you will be exempted to the extent of 25%. I hope you all have understood with 6 times of the duty saved in 6 years time, divided into two segments, 4 years and the 2 years, or duty import validity of the authorization is 18 months. You can import it within 18 months. What is not there to be imported? Cables, unless until it is integral part of the capital goods. Railway wagons not permitted. Tractors not permitted. Trucks, trippers, dumpers available only for the mining sectors. Motor cars, sports utility not permitted. Airport ground handling equipments not permitted. Furniture, carpet, crockery, etc. only for the hotel industry. Construction equipment only for the providing services. All construction material not permitted. Computer printers not permitted. All second-hand capital goods not permitted. Capital goods, captive plant generations not permitted for the unless until it is for the supply of electricals. These are basically the benefit available to you under the EPCG schemes, because government want the capital goods to be of the high end, high state of the art, good capital goods, and you can make use of it for the purpose of the manufacturing of the export products, so that the exportable products is of the high quality. Now, friends, let me also touch upon one more scheme which is meant for the agriculture and value-added products which are of the agricultural nature. That scheme is a cash incentive scheme. Transport and market assistance, transport and marketing assistance, TMA. Chapter 7A of the foreign trade policy, which has been drawn attention to government wants agriculture products or value-added agriculture products, because here it is not an incentive in that sense, because agriculture products are not still under the WTO to some extent. So government draw attention of that. Government have found out that marketing cost is high, transport cost is high, freight cost is very high. To mitigate that advantage of higher cost of transport of export specified in agriculture products due to some transshipment, and to promote brand recognition of the Indian agriculture products in the specified overseas market. It is not for all the markets. It is not all across the globe. Certain specified export market, I'll be sharing with you where the benefits are available under chapter 1 to 24, except certain items which are being taken out of these schemes. All the benefits are available if you are exporting to a particular country, particular region of the globe. Suppose chapter 1 to 24, certain items from chapter 1, 2 and 5, 3 and 4, 6, 7, 10, 13 and 14, 17, 22 and 24. Certain items has been taken out, which because of the reason, either they are the high valued or they do not need any kind of this support even. So those items has been taken out of the benefits available under the TMA. How much is the quantum of benefit? The mode you export, like if it is a shipping line, 20-feet container, normal container, reefer container, refrigerated container, or by year per kg. Western African countries, 11,200 per 20-feet container, 19,600 rupee per 20-feet container for the reefer container, 84 paisa per kilogram if it is by year,
East Africa 11,200, 21,084 paisa. EU countries 9,800, 21,000, 1.12 paisa. Gulf countries 8,400, 14,000.70. North America 21,000, 28,700, 2.80. Asian 5,600, 12,600, 70 paisa. Russian and CIS 12,600, 22,400, 70 paisa. Far East 8,400, 12,250, 84 paisa. Oceania 16,800, 24,500, 2.80. China reefer container only allowed 12,600, 84 paisa. South America 23,800, 31,500, 3.4 paisa. So what is the reason? West African countries, there are certain countries given. EU countries are given. Gulf countries, certain countries are given. North America, certain countries are given. Asian countries, certain countries are given. Russia and CIS, certain countries are given. Far East countries are given. Oceania, China, South America, these are the countries. So friends, having been understood with the reasoning behind the objectivity by which the scheme is being drawn attention to, or the non-eligible certain items, ineligible categories, or the certain things which one has to understand with, certain parameters you have to draw attention if you want to be a great or good consultant into this area. So you have to make attention of little study to be carried with. I'll be sharing the PPT with my friend Sandeep ji, who is the convener of the study circle, to spread around their membership. So there are the certain categories on which this benefit is not available under the TMA, like products exported from the SEZ, EOUs, etc. SEZ exported through the DTA, goods imported, exported as it is, export through the transshipments, items which are restricted or prohibited, items with the minimum export price or the export duties unless specifically allowed, export goods through the courier or foreign post office, where the no freight is being paid by the exporters. And thus this benefit is available direct to your account. Once it has been processed, you have to file the application with the office of the DGFT. It has been processed, so it will be directly credited to your account. So friends, to understand with procedure is quite simple. It is through the automatic route, e-system, e-governance system. Claim to be filed within 1 year of the completion of the quarterly basis. Chartered accountant certificate required. Application fee is also there. Certain documents like EP copy of the shipping bill, commercial invoice, BL, certificate of a chartered accountant, proof of lending, exporter guidelines has to be followed with. So with mandatory online filing. So these are certain procedures and the process by which you can undertake and avail the benefit under the foreign trade policy. Friends, these are certain provisions which I brought attention to each one of you. Not to start with where the chartered accountant's role is there under the foreign trade policy. Chapter 2, which relates with the general provisions, on specific things, there can be a requirement of a chartered accountant certificate. Chapter 3, for filing of the claim under the SCIS, need of a chartered accountant certificate at the time of the application of the benefits available under the SCIS scheme. In the chapter 4, while availing the benefit under the chapter 4 on the duty, this exemption, this advance authorization scheme, while filing the application, then also chartered accountant certificate required. While discharging the obligation, having been for the purpose of, because it is a condition, export has to be undertaken with, so that then also the chartered accountant certificate required. DFAI also chartered accountant certificate required while filing the application or while claiming the benefit by way of the transfer or imports, the CA certificate required. Chapter 5, while filing the application for the under the scheme are called EPCG, CA certificate required. While obligation being completed,
then also chartered accountant certificate required. Under the TMA category also CA certificate required. So these are the schemes, under the different commercial and the economic and commercial law at different locations, different systems, the chartered accountant plays a very big role. If we talk about the professional opportunity for the chartered accountants, I can find out hundreds and hundreds of the opportunities under these law where the chartered accountant mind as a good skill to be applied with, or either on the either the certificate required or otherwise as a professional acumen required, analytical skill required. The chartered accountant has a big role to play in the ecosystem of the development of the economy, as well as the continuance of the this control and the mechanism of the regulation on for the clients also. The friends, these are the certain things which I thought of. Let me brought to each one of you. There are the certain specific area specific benefits also, like ROSCTL for the garments and the made up items. Those are the benefits available under this scheme. There are the certain benefits which are from the government to government for the development of the infrastructure or the other sectors. There are the certain benefits which are not, though they are not there in the foreign trade policy, but they are there in the custom law or the different law. Like if we talk about this project import, if any of your clients wants to import any project or any without taking the obligation under the EPCG schemes, but they can import it under the project import guidelines guidance 1986 under the scheme called project import regulation. So what is that? In that case, you are being given the benefit of the concessional rate of duty, not the zero duty, but the concessional rate of duty. That is the advantage there. So in those situations, the export is not to be made. There is no obligation for the making the exports, but you are allowed to import at a concessional rate of duty. So similarly, in the case of, there are the baggage rules where a company, so then the exports and imports transactions are in a different manner. In the case of the export of the merchant under the GST, there are the different rules. So these are basically certain systems by which one can understand. I can only share with each one of you that this is a very lucrative subject. With a, only by reading for the few days, one can get control on the subjects, and one can make use for the clients as also as a consultant to the professional community also, because sometimes there are number of professionals. We have a client list. It is not like clients are directly traveling to us. Sometimes our professional brothers and sisters also, they get our advice and they brought, because the subject specific is little easy to understand, but interest has to be interest has to be shown, because one has to be on a regular day-to-day notification also comes in. It is a dynamic subjects. One has to read on a day-to-day basis what is going on across the globe, and which subjects, which particular sectors is going. So it has an impact on the so many newer things. Even in the capital market, if you talk about some policy liberalization is there, or some DTA or some FTA is going to be signed, so then people find how it is going to impact the Indian industry. You see, like government has a protective mechanism also. DGTR is one of the area, trade remedies, because government has a control not through these law, but the tariff and non-tariff barriers also. Sometime because of the glutting in the Indian system, they come out with the anti-dumping safeguard duties. All are the trade remedies available with the government of India
to protect the Indian industries also. That is the another area as a professional one can profess with. That is also a gray area available for the professional. Huge demand, not only in India, in the other countries also. Indian professionals, though mainly the legal professionals, but the same kind can be done, same thing can be done by the Indian chartered accountants also. They can serve to the globe also, sitting here to the global countries also in the custom law also. Because you see, like we all are in a global economy, the law almost is synchronized. Earlier law used to be different. Now law is almost similar in nature. Of this similar kind of law is available across the globe. So friends, these are basically to understand with economic and commercial law, different regulatory mechanism whatsoever is available in our country. And if we can find out some new opportunities, so that will be giving you a bigger strength, not only the recognition, financial strength also. If we talk about the specialization, if you go to the particular regulator and find the opportunity there, and you profess and you create the name in that, so you can see like your name in addition to your financial power will be growing very fast. With these words, I hope if any question or any is there from any member, or any question is there, so then I can reply with. Otherwise, I hope my subject, though it is within the time which I thought of, if any question is there from any member, so we can reply with. Otherwise, I am very grateful and thankful to all the participants for the patience hearing, and thanks to our my chairman in the regional council, Durga Das Agarwal ji. We enjoyed the days together, years together in the regional council and beyond also. And thanks to the Sandeep ji also, the convener of the study circle, for inviting me here on this specific subject. I do not know how many members has remained interested, but I can only simply say in the ecosystem of the economy of the country, this subject is of the high importance, because it in the interest of the profession, also in the interest of the business community also, because there is a somehow people feel like there are no good consultant in this area. We have to create so many consultant in this particular area, not only in Delhi, but all across India. So I hope will go benefit. Some will be created from here, the platform of the East Delhi CP Study Circle also. Sandeep ji, over to you. Thank you so much, sir. Thank you so much for such wonderful, nice deliberation. I thoroughly enjoyed it, and I believe the people and friends who have participated to this webinar has also enjoyed. थोड़ी आवाज कम है आपकी संदीप. Thank you. अभी आ रही है? हाँ, अब ठीक है. Thank you so much, sir. We thoroughly enjoy it, and I believe participant who has joined this webinar has also enjoyed it. It was a wonderful and detailed discussion about foreign trade policy. And even though if you see the targets which government has made for the export, like 500, you are just saying that 600. it was around $600 billion, right? Earlier it was 400 billion. Now they have revised in an upward trend, right? It's a great target. Apart from that, if you see the e-commerce market in India, then I think 2025, the e-commerce market size is going to increase around $188 billion. It's a huge opportunity for a professional like us, and the area we are playing. So many, even FDIs are increasing day by day, and so many international players are coming to India for playing this. It's a huge, but एक छोटी सी query है sir, मेरी question है. Nowadays we are listening and also reading in the newspaper. Future के साथ जो हुआ, future group के साथ, future group due to some losses and all, they have sold their businesses to RIA.
बट देयर वाज सम एग्रीमेंट विथ अमेजन के साथ जो एग्रीमेंट था तो कहीं ना कहीं स्टक कर गया। फिर अमेजन के साथ वो कंपटीशन कमीशन में सीसीआई में चले गए। फिर देन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो व्हाट वाज योर व्यू एज कि कहीं ना कहीं व्हाट आई फील कि समवेयर हमने जो गवर्नमेंट एंटिटी जो इंडियन एंटिटी थी उसकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि एक बाहर की कंपनी आती है इंडिया में, आप लॉस करते हो, आपको वो एट द सेम टाइम आपको हेल्प आउट भी नहीं करती है। एट द सेम टाइम जब आप अपने आप को जब रिक्यूज करना चाहते हो आपको पुश करती है कि नहीं आपको ऐसे निकलना नहीं है। तो व्हाट डू यू फील, इट्स ये इंडिया में ही ऐसा है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड और समथिंग, और या कुछ इट्स समथिंग अ डिफरेंट स्पेशल केस काइंड ऑफ थिंग? मैं आपको बताऊं संदीप भाई, सिस्टम पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर जो है जी जी एक कहीं ना कहीं कॉमर्शियल और इकोनॉमिक लॉ के ऊपर एक अलग पैरामीटर्स के अंदर चलता है। वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस है। जी जी एक जो लॉ है वो अंडर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की आपने और मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी, आपने कुछ सिस्टम के अंदर हमारे और आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए विच इज विद इन द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक लॉ ऑफ द कंट्री। तो नाउ नेचुरली जो है वी आर बाउंडेड बाय आवर कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ इट इज matching with, naturally you understands with the first right of refusal was the question here in this case, but somehow I do not know, I have not gone through the whole agreement as such, but definitely in the interest of the global system, in the we have to respect the law of the land by which you are taking care of the interest of the people. Simply says ki globe is one. Say the trade policy which are international in nature, whether it is the FDI, you talk about the FDI to the extent of the percentage for a particular sector to sector, or whatsoever the methodology is there, automatic route or the approval route, like if it is been brought for the approval route for the neighboring countries, it is for everyone. It is for the approval to be received, then only money can be brought in. Same way, the which is been made free or which is been allowed with, if it is been permitted with, so the contractual obligation has to be accordingly understood with. But in the commercial or the nature, the disputes are bound to be there. Somehow, either interpretational dispute or sometime management's own understanding, or sometime by the ill thought also. Sometime you see like same goods sold, and then you disagree, then you sell it to the other at a higher price. So dispute arises. So these are bound to come. It is not only in India, it will remain all across. It is not limiting to the country specific. It will be there, because these are the transactions, not one, it is a contractual obligation only. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for clarification. Now I'd like to request our founder convener Shri Durgadas ji to conclude the session. Over to you, sir. अभी 2-3 मिनट बचे हैं। अभी हम चुग साहब से पूछने जा रहे हैं। ये तो एंजॉय कर लिया सबने। मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन उसमें, कोई बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, लोग सब समझ गए हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगा कि भैया क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब तो जो है ना, हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाई। नहीं, पढ़ाई अच्छी करवाई है जी, ऐसी बात नहीं है। सब समझदार है। तो प्रश्न आएगा तो आपके पास पूछ लेंगे। उनको सबको पता है कि चौक साहब अवेलेबल रहते हैं। जी 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 जी। तो सर आईसीआई में क्या चल रहा है सर, नई चीजें? आईसीआई के मैं आपको बता दूं, अभी हमारा जो नया टर्म है, सेकंड टर्म है, वो 12 फरवरी को हम लोग नई टीम में आएंगे, नई टीम के साथ आएंगे।
जी जिस जो लीड करी जाएगी बाय द न्यू प्रेसिडेंट। एक तो उनका विजन अभी आना शुरू हुआ है। दूसरी राइट। चीज है कि गवर्नमेंट फ्रंट पे के अंदर हमारे कुछ बिल के अंदर जो हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आ रही हैं हम्म। जो अभी स्टैंडिंग काउंसिल के कमेटी पास पे। जो है, हाँ स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है गई हुई हैं, ओके। उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो वो जो ओके। पब्लिक डोमेन में भी आपने सबने देखा होगा बिल आया है, उसके अंदर कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उनके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी का व्यू आएगा। स्टैंडिंग कमेटी के पास इंस्टीट्यूट के अपने व्यू चले जा चुके हैं। उनकी एक पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद में वो बदलाव एक आने की जो उम्मीद है वो अगले कुछ महीनों में, मे बी इन ए मंथ और टू, or whenever the next parliament comes in after the budget session or even in the budget session, second of the May or June, will we find some changes are being brought under the Chartered Accountant Act, and which will be naturally may or may not be in the professional interest. This cannot be commented upon because certain points so far there that is not giving the autonomous uh, feel of the profession if they are being brought in as it is. सर एक जनरल पॉइंट है आज की डेट में, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वेदर दे आर यंगस्टर्स यार, ये यू कैन से कि एमएसएमई जो है, एसएमई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आपने अभी इलेक्शन के दौरान काफी लोगों का फीडबैक, आपका पीआर बहुत अच्छा है, तो एक ब्रॉडली मतलब एक ये बड़ा सीरियस पॉइंट है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, वेदर दे आर यंगस्टर्स और वेदर दे आर एट द 50 प्लस और 60 अराउंड, उनको सरवाइव करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मतलब उस पर इंस्टीट्यूट की कभी कुछ नजर गई, कोई काउंसिल में कुछ डेलिब्रेशन होके कि भाई किस तरह से क्या हम आगे बढ़े, कैसे करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है इकोनॉमी के लिए। मैं समझता हूँ 90% जो भी रेवेन्यू है कुछ है वो बड़ी बिग टॉप कॉर्पोरेट्स और टॉप फर्म ले जाती हैं सारी चीजें, मतलब काम उसका ले जाते हैं ना, जो बड़ी फर्में हैं और बड़े जो क्लाइंट्स हैं। लेकिन जो छोटे 90% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके पास छोटे छोटे काम हैं और उनके साथ में स्टाफ की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, हाउएवर इंस्टीट्यूट इज टेकिंग केयर ऑफ के प्रोवाइड उनको फ्री में सॉफ्टवेयर करें, ये करें। लेकिन एक चीजें हैं आपने भी महसूस की होंगी, बिकॉज यू आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म से आप आगे गए हैं, तो इसके बारे में कभी काउंसिल ने कुछ डेलिब्रेशन किया या फिर आप एक अपना एजेंडा बना के उसको रखे हैं काउंसिल में, कभी इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? क्योंकि मेनली जो वोटर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम कहते हैं 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 1.5 लाख प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें से 1 लाख प्रैक्टिशनर्स तो बड़े हैंड टू माउथ रहते हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। तो मतलब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जो जितने लोगों से मिला हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा, समय भी कम है, आप इतना डेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मेरा एक ये थॉट है इसके बारे में, काउंसिल हमारी कुछ सोचे, कुछ इसमें एक व्हाइट पेपर निकालें, कुछ लोगों के फीडबैक लें, तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दुर्गा दास जी, योर पॉइंट इज डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट कि ये एक चर्चा का विषय जरूर रहा है काउंसिल में भी, लेकिन काउंसिल में जो डेलिब्रेशन है इस सिस्टम में उतना नहीं हो पाया, क्योंकि सिस्टम में हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है ऑटो मोड में, ऑटोमेटिक सिस्टम में चलती है। हम आज जो है इसको अकाउंटिंग और टैक्स प्रोफेशनल की जगह है, हम आपको इसको एज ए कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है प्रोफेशन मानते हैं। और जो हमारा यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो 85% जो है वो प्रैक्टिस में आना नहीं चाहता, फॉर वन रीजन और दी अदर, क्योंकि चैलेंजेस हैं, उसको उतना जो है इनिशियल जो है सपोर्ट नहीं मिलती कि वो प्रैक्टिस में आ पाए। और बट ऑब्वियस है वो चाहे वो बिग 4 में भी काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस है। वो भले ही वहां पे अच्छा पैसा भी अर्न कर रहा है या अच्छे माहौल में भी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक अपना जो कल्चर है, वो जो इंडियन कल्चर है या इंडियन सिस्टम है,
वो उतना ल्यूक्रेटिव नहीं है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की तरह या एक पावरफुल माइंड की तरह यूज करे। वो भी एक क्लर्क की तरह एक क्लरिकल सिस्टम के अंदर ही बन के रह जाता है। और दूसरा जो है, जब हम कहते हैं कि भाई हमारी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, अनफॉर्चुनेटली जो है अट्रैक्शन हमारा जो है जो बनता है वो बिग फोर की तरफ बनता है। लेकिन क्या हम भली भांति जानते हैं कि क्या वो कल्चर जो है वो हमारे सिस्टम में कितना फिट है? तो आई कैन नॉट इन द ओपन प्लेटफॉर्म, लेकिन हमें इसको पूरे सिस्टम को जो एक रिव्यू देने वाली जो बात है, एक व्यू देने वाली जो बात है, वो उसके लिए आप जैसे जो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो प्रोफेशन के अंदर भी एक गुड़ तरीके से जानते हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने की जरूरत है। इंटरनली हमने अभी जो है हमारी एक रिव्यू ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर चर्चा चल रही है। एक हमारे जो सिस्टम के अंदर जो है कुछ और बदलाव लाने की बातें चीजें चल रही हैं। कुछ इस विजन अपने जो स्पेसिफिक एरियाज है उसको एक्सपेंड करने कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो ये चर्चा जो है मेरे ख्याल में आने वाले कुछ समय में कुछ पॉजिटिविटी लेके आएंगी, कुछ ऐसी चीजें डेवलप करेंगी जिसके द्वारा हमारा एक जो प्रोफेशनल है वो एक माइंड उसका जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर लेके आएगा, और एक उसके अंदर जो एक फील जो झील है, जिज्ञासा है, वो एज ए ट्रू प्रोफेशनल वाली वो फील की जाएगी। तो मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव प्रोफेशनल हूं, आप जैसे हमने बहुत कुछ सीखा जब आप रीजन में हमें लीड करते थे एज ए चेयर। आई वाज जस्ट ए मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल, यू वर चेयरिंग द रीजनल काउंसिल। तो हमने भी ऐसी तरीके से अपने आप को अपने विचारों को एक पॉजिटिविटी के द्वारा, बट ऑब्वियस है बदलाव की जरूरत है, बट ऑब्वियस है चीजों को आज के पर्सपेक्टिव से और फ्यूचर ड्रिवन पर्सपेक्टिव से सीखना पड़ेगा। और सिस्टम के अंदर कमियां भी हैं जो आने वाले समय में आई एम क्वाइट होपफुल कि विल बी ए मच बेटर प्रोफेशनल इन द टाइम टू कम। तो थैंक यू। ठीक है चुग साहब, क्योंकि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं एसएमईज का, क्योंकि आप भी वहीं से निकले हुए हैं, आप सारी चीजें जानते हैं। आज की डेट में प्रैक्टिकली ना जो मतलब जो बच्चे भी हैं वो कहते हैं सीए नहीं करना, क्योंकि सीए करने के पहले तो सीए बड़ी मुश्किल से होती है, उसके बाद भी जो उसके जो साथी हैं, संगी हैं, भाई बहन हैं, मालूम पड़ा वो किसी ने बीटेक की, किसी ने वो की, और वो अच्छा प्लेस है और समय से घर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन सीए बेचारा टेंशन भी निकाल लेता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और आप एक पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, तो मैंने बस ये पॉइंट उठाने का मकसद यही है कि आप काउंसिल में इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि हमारा प्रोफेशन जो नोबल प्रोफेशन और एक इंटेलेक्ट माना जाता है, तो उस डायरेक्शन में हम चल सके। इसी उम्मीद के साथ आपने समय निकाला, 2 घंटे हमारे साथ स्पेंड किए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू संदीप जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आप सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमने इस वीक में पूरा वेबिनार रखा हुआ है एक्सेप्ट 26 जनवरी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप सारे वेबिनार ज्वाइन करें। कल हमारी थोड़ी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है वेबिनार, टाइमिंग विल बी सेम 4 to 6, तो आप जरूर एंजॉय करें। सिमिलरली हमने आफ्टर 26 जीएसटी पे भी रखा हुआ है, थोड़ा इनकम टैक्स पे भी है, तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे उसको। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं डीडी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप आए, अपने समय निकाला सर, थैंक यू सो मच सर। और हंसराज जी, आई थिंक सर ने म्यूट कर रखा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए और आज हमारे प्रोग्राम की इस वर्ष की पहली प्रोग्राम की शुरुआत कर दी सबने। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब विदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।